फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री एंड सिविक्स टर्म बुक। उसका फर्स्ट लेसन देखने वाले हैं। तो ये देखो, मैंने निकाला हुआ है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं। वी स्टडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लास्ट ईयर। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द medieval period of the Indian history. The period from the 9th century CE till the end of the 18th century CE, considered to be the medieval period of the Indian history. In this lesson, we are going to study the source of medieval history. Second paragraph. History gives us the chronological, scientific, and the scientific account of the past event. Four factors are very important from the viewpoint of the history. They are the individual, society, place, and time. History must be based on the authentic evidence of the proof. These proofs are known as the source of history. अभी हम इसके बाद का पैराग्राफ देखेंगे. Let us classify these source into material source, written source, and oral source. To learn more about them, let us also include the source of history. We have to consider many factors related to the historical event that we want to study. It is necessary to support our study with the historical source. These sources have to be verified. We have to see whether they are authentic. It is necessary to use the source judicial and only after a critical. Forts have an important place among material source. Some major types of the forts are hill forts, fortress forts, sea forts, and the forts of the plains. Monuments include samadhis, graves, virgala, and the buildings include places, magazines, queens, squares, रेनवासा, and also home of the common people. अभी मटेरियल सोर्स सीधा दिखाया हुआ है. इसके बाद का पैराग्राफ हम देखेंगे अभी इधर. तो अभी इसके बाद में हम देखेंगे ये इसके बाद का ये डायरेक्ट कंटिन्यू आप रीडिंग करेंगे. All provides insights about the period. Looking at them, we came to know about the development of the culture, the economic conditions, and the quality of the art styles and the buildings and people standard of the living in that particular period. इसके बाद में अभी कैन यू टेल ये हम नहीं पढ़ेंगे. इसके बाद में द कॉइन्स मेड बाय द डिफरेंट रूलर्स यूज मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. फ्रॉम दिस कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, देयर पीरियड, गवर्नेंस, रिलीजन्स. तो ये है अभी अगला पेज 2nd नंबर का. तो विरगला देखेंगे हम ये इसके नीचे का पर्सनल डिटेल एक्सेट्रा. सिमिलरली वी आल्सो लर्न अबाउट वी फाइनली ट्रांसलेशन एंड द इकोनॉमिक condition prevailing at the time. We also see how far had advanced in the period from the image of the Ram Sita of the coins of the empire Akbar of the or Shiva Parvati or the coins of the Hyder Ali. We see the regional coordination of those days. The Peshwas use of the Arabic of the Persian language on their coins. This through like on the use of the language in the period. भाइयों अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे इस लेसन का आगे का पार्ट. बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक. वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए.